নমস্কাৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসম বিদ্যা নিকেতনৰ এই চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত হিন্দী বিষয়ৰ 5 নম্বৰ পাঠটি আলোচনা কৰিম। আহাচোন আমি প্ৰথমে পাঠটি এবাৰ পঢ়ি লওঁ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। संसार में ऐसे महान पुरुष विरले ही हुए हैं जिन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठकर अथक प्रयासों, परिश्रम, दृढ़ संकल्प, निष्ठा, लगन, इच्छा शक्ति, आस्था, विश्वास और नई उम्मीदों से भाग्य बदल लिया हो। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ऐसे ही महान पुरुषों में से एक हैं, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए थे और देश के उच्चतम पद राष्ट्रपति तक पहुंच गए। सादगी, सरलता, ईमानदारी, स्नेहशीलता, आध्यात्मिकता और दया आदि गुण कलाम को विरासत में मिले हैं। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि हासिल की। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, भारत 2020, मेरी यात्रा और इग्निटेड माइंड पुस्तकें लिखी। एक बार छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, छात्रों का कर्तव्य है कि वे अपने अध्ययन में मन लगाए। राष्ट्र के विकास में यही उनका योगदान है। वे अध्ययन के प्रति जागरूक रहे। शिक्षा का रूप ऐसा हो जिससे छात्रों का मानसिक विकास हो, तकनीकी ज्ञान, चारित्रिक ज्ञान तथा नेतृत्व का विकास हो। वे संपूर्ण जीवन में सीखे तथा समयबद्ध कार्यक्रम से राष्ट्र का निर्माण करें। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरा जीवन आदर्श नहीं है लेकिन अंधकारमय स्थान पर रहने वाले गरीब बच्चे तथा शोषित समाज के बच्चे मेरे जीवन से कुछ दिलासा ले सकते हैं, जो उन्हें पिछड़ेपन और निराशाजनक माहौल से उबरने में मदद करेगी। उन्हें ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जो अपने अथक परिश्रम, लगन और देश सेवा की भावना से उच्चतम पद पर पहुँचे। डॉक्टर कलाम भी उसी श्रेणी में हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर उठकर देश के सर्वोच्च स्थान तक पहुँच गए। हमें उनके वैज्ञानिक, चिंतक, दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। এতিয়া আমি পাঠটি এবাৰ অসমীয়াত আলোচনা কৰি লওঁ। আব্দুল কালাম এনে এজন মহান পুৰুষ যিজনে নিজৰ গভীৰ পৰিশ্ৰম আৰু পুৰুষাৰ্থৰ যোগেদি গোটেই বিশ্বত নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল আৰু টেকন'লজিৰ দিশত ভাৰতবৰ্ষক আগুৱাই নিছিল। তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1931 চনৰ 15 অক্টোবৰ তাৰিখে তামিলনাডুৰ ৰামেশ্বৰম নামে ঠাইত। তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নাছিল। সেইবাবে কম বয়সৰ পৰাই তেওঁ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক অৱদান আগবঢ়াবৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিছিল। স্কুলীয়া শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত দেউতাকক আৰ্থিক সকাহ দিবলৈ তেওঁ বাতৰি কাকত বিক্ৰী কৰাৰ কাম কৰিছিল। স্কুলীয়া জীৱনত তেওঁ এজন মধ্যমীয়া ছাত্ৰ আছিল আৰু তেখেতৰ পঢ়াৰ প্ৰতি থকা ইচ্ছা আৰু আগ্ৰহৰ কাৰণে তেখেতক শিক্ষকে সদায় অনুপ্ৰেৰণা দিছিল। তেওঁ ছেইণ্ট জোচেফ কলেজৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু চেন্নাইৰ মাদ্ৰাছ ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজিৰ পৰা এৰোনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে। তেওঁ বহুতো মিছাইল প্ৰগ্ৰেমত আগভাগ লৈছিল আৰু টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষক আগবঢ়াই নিছিল। অগ্নি আৰু পৃথিৱী মিছাইল বনোৱাত তেওঁৰ অৱদান আছে। সেইবাবে তেওঁ কি বুলি কোৱা হয়, মিছাইল মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয়।
তেওঁ বহুতো জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থ লিখিছিল। তাৰ ভিতৰত আছিল উইংছ অফ ফায়াৰ, ভাৰত 2020, ইগনিটেড মাইণ্ড আদি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি তেখেতৰ উৎসাহমূলক বক্তৃতা আৰু আলোচনাসমূহৰ বাবে তেখেত যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজতো অতি জনপ্ৰিয় আছিল। এবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বোধন কৰি কৈছিল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল কৰ্তব্য হ'ল তেওঁলোকে পঢ়াৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগে। ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশত এয়ে তেওঁলোকৰ অৱদান। তেওঁলোকে অধ্যয়নৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব লাগে। শিক্ষা এনেকুৱা ৰূপত হ'ব লাগে যি ৰূপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক বিকাশ, চাৰিত্ৰিক জ্ঞান, দূৰৱৰ্তী শিক্ষা আদিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ বিকাশ হৈ নেতৃত্বশালী লোকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। শিক্ষা জীৱনব্যাপী হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কম সময় তথা এটা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এখন নতুন ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। তেওঁ আত্মজীৱনীত লিখিছে যে মোৰ জীৱন কোনো আদৰ্শ নহয়, কিন্তু অন্ধকাৰময় পৰিৱেশত থকা দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী বা সমাজৰ পিছ পৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ জীৱনৰ পৰা অলপ সান্তনা ল'ব পাৰে, যিয়ে নিৰাশজনক পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সহায় কৰিব। এনে এজন মহান ব্যক্তিক আদৰ্শ হিচাপে লৈ আমি আমাৰ জীৱনটো সফল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু 2015 চনৰ 27 জুলাইৰ দিনাখন শ্বিলঙত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত বক্তৃতা দি থকা অৱস্থাতে অসুস্থ হৈ ডক্টৰ কালামে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল। এতিয়া আমি এই পাঠটিৰ শব্দ অৰ্থসমূহ এবাৰ পঢ়িম। शब्दार्थ: संसार, दुनिया, विरले, बहुत कम, अथक, न थकने वाला, प्रयास, प्रयत्न, दृढ़, पक्का, संकल्प, निश्चय। विकास, प्रगति, मानसिक, दिमागी, संपूर्ण, पूरा, कार्यक्रम, आयोजन। पिछड़ापन, पिछड़े हुए, श्रेणी, वर्ग, वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान रखने वाला, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। निष्ठा, विश्वास, आस्था, विश्वास, स्नेह, प्रेम। कर्तव्य, फर्ज, अध्ययन, पढ़ाई, योगदान, सहयोग, जागरूक, सावधान, तकनीकी, यांत्रिकी, समयबद्ध, नियमानुसार, राष्ट्र, देश। आदर्श, मानसिक। माहौल, वातावरण, सर्वोच्च, सबसे उच्च, चिंतक, विचारक। এতিয়া এই পাঠটিত থকা সমূহ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি আলোচনা কৰোঁ আহাচোন। ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? কি কৈছে? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाমৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो সম্পূৰ্ণ নাম কি আছিল? अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? डॉक्टर कलाমৰ जन्म কেতিয়া আৰু ক'ত হৈছিল? डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? 1931 চনৰ 15 অক্টোবৰত। আৰু ক'ত হৈছিল? তামিলনাডুৰ रामेश्वरम नामे ঠাইত। डॉक्टर कलाम ने स्नातक की उपाधि कहाँ से हासिल की? डॉक्टर कलामे स्नातक उपाधि ক'ৰ পৰা অৰ্জন কৰিছিলে? डॉक्टर कलाम ने स्नातक की उपाधि माद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की। ক'ৰ পৰা অৰ্জন কৰিছিলে? माद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी পৰা। उन्होंने किस मिसाइल का परीक्षण किया? उन्हें क्या कहा जाता है? তেওঁ কি মিসাইলৰ পৰীক্ষা কৰিছিলে আৰু তেওঁ কি বুলি কোৱা হয়? उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। তেওঁ কি মিসাইলৰ পৰীক্ষা কৰিছিলে? अग्नि और पृथ्वी। আৰু তেওঁ কি বুলি কোৱা হয়? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया বুলি কোৱা হয়। उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? তেওঁ কি গ্ৰন্থ লিখিছিল? उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, भारत 2020,
मेरी यात्रा और इग्निटेड माइंड पुस्तके लिखी हैं কি গ্ৰন্থ তেওঁ লিখিছে উইংছ অফ ফায়াৰ ভাৰত 2020 মেৰী যাত্ৰা আৰু ইগনিটেড মাইণ্ড ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ঘৰত ভালদৰে পাঠটি পঢ়িবা আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ধন্যবাদ